हेलो और वेलकम बैक टू क्रिकेट नेक्स्ट। मैं हूं जेमी ऑल्टर और आप देख रहे हैं क्रिकेट विद जेमी का एक और लाइव स्ट्रीम, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जहां पे आपको अनफिल्टर्ड सीधी क्रिकेट की बातें सुनने को मिलेंगी। इफ यू कैन हियर मी, लेट मी नो। वी हैड अ टेक्निकल ग्लिच जस्ट बिफोर 5 minutes ago. आई रीलोडेड द स्ट्रीम। होपफुली आप लोग मुझे अब सुन सकते हैं। जो कुछ मेरे साथ आपको डिस्कस करना है आप वो पूछ सकते हैं। जो व्यक्ति मेरे साथ जुड़े हैं प्लीज आप, यस यू गॉट द ऑडियो, फैंटास्टिक। एज यू नो, हिट द लाइक बटन। पता नहीं होता है, आई थिंक लाइक यू नो बिफोर आई सिंक माय फोन एंड माय लैपटॉप रिसेंटली। कभी कभार ऑडियो यहां से आता है, ऑडियो वहां से आता है, होता है। वी स्टिल ग्रैपलिंग विद टेक्नोलॉजी। थैंक यू ऑल, यू आर हियर। तो हम दोस्तों बात कर रहे हैं आज पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन के बारे में, जिसके समाप्ति पर एक बार फिर से टॉप ऑर्डर यानी कि भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर ने लड़खड़ाई, लेकिन 81 फॉर 3 यानी कि लीड है 308 रन की। मेरे हिसाब से ये बहुत 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 अच्छा टोटल है। कल 2 सेशन बैटिंग करके पूरा बांग्लादेश को दबाव में डालकर ये टीम, जैसे कि मैंने प्रिडिक्ट किया था इस मैच से पहले, ये मैच या तो तीसरे दिन पर या फिर चौथे दिन के पहले सेशन के से पहले समाप्त हो जाएगा। बिकॉज दैट इज द गल्फ, जो फर्क है, जो अंतर है इंडिया की बैटिंग में और बांग्लादेश की बैटिंग में। डिस्पाइट दैट वॉबल, द गल्फ इन क्लास वाज जस्ट टू मच टू सी। 37 रन, 4 विकेट भारतीय टीम ने गंवाए आज सुबह, लेकिन जो मेहनत अश्विन और जडेजा ने कल कर दी यानी कि डे 1 पे टू गेट द टोटल 144 पे 6 से जो 100 रन तकरीबन 200 रन तकरीबन इन दोनों ने जोड़े। जैसे कि मैंने कल कहा था, मैच वहां पे खत्म हो चुका था। वी न्यू कि बांग्लादेश की बैटिंग बहुत खराब है। ये टीम पाकिस्तान के सामने एक रोड पर 36 पे 6 थे 3 हफ्ते पहले, और यहां हम बात कर रहे हैं बुमराह की, सिराज की, आकाशदीप की, अश्विन और जडेजा की, जो 40 पे 4 पे बांग्लादेश की पारी थी। आई हैड नो डाउट्स वंस अगेन कि दे वर गोइंग टू गिव बोल्ड आउट, बल्कि मैंने कहा था क्रिकेट नेक्स्ट के शो पर ये 150 तक नहीं पहुंचेंगे एंड इंडिया दोबारा बैटिंग करेगी। जब मैंने देखा बांग्लादेश की खराब बैटिंग, जो कि किसी को हैरान नहीं होना चाहिए इनकी बैटिंग देखकर, मुझे इनके कप्तान नजमुल हुसैन शंटो की स्टेटमेंट याद आया। मानता हूं बांग्लादेश में इतिहास रचा के 2-0 जीत के बाद वो आए थे इंडिया, बहुत कॉन्फिडेंट थे। नजमुल हुसैन शंटो ने बयान दिया था इस मैच से पहले कि हमारी कोशिश रहेगी कि हर मैच को आखिरी सेशन में ले जाने की, यानी कि डे 5 के आखिरी सेशन में हम लोग अगर मैच ले गए तो वहां कुछ भी हो सकता है और हम भारतीय टीम को हरा सकते हैं। जवाब में जब ये रोहित शर्मा के कानों में बात आई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा था भाई इनको मजे लेने दो। एंड आई एम जस्ट वंडरिंग हाउ फूलिश वुड नजमुल हुसैन शांतो फील राइट नाउ। आपने कहा था कि हम हर मैच को डे 5 के आखिरी सेशन तक ले जाने की कोशिश करेंगे, और यहां आप 3 दिन के अंदर शायद हारोगे। भाई आप पाकिस्तान को हरा के आए हो, एक बहुत ही खराब पाकिस्तान टीम, एक ऐसी पाकिस्तान टीम जिनके कप्तान और कोच एक पन्ने से नहीं पढ़ पा रहे। आपको याद होगा 1 महीने पहले पाकिस्तान ने रावलपिंडी में स्पिनर को बाहर करके एक नहीं पूरे 5 फास्ट बॉलर्स खिलाए। उसके बाद शान मसूद ने, जब अच्छी खासी टोटल थी, लीड शायद 600 तक जा सकती थी, शान मसूद ने वहां पर डिक्लेयर किया। तो एक फालतू पाकिस्तान टीम को हराकर आपके मन में यह कॉन्फिडेंस आया कि हम इंडिया को, जो कि पिछले 12 साल में केवल 3-4 टेस्ट मैच हारी है, वो भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे टीम के सामने घर पे, आप उनको डे 5 के आखिरी सेशन तक ले जाओगे। और यहां आपकी बैटिंग 50 ओवर तक नहीं टिक पा रही है। भाई कहीं ना कहीं खुमारी में, ओवर कॉन्फिडेंस में, हम कहते हैं कि इंडिया ने किसी को अंडर एस्टिमेट किया या इंडिया ने किसी को हल्के में लिया। यहां बांग्लादेश के कप्तान और उनकी पूरी टीम ने इंडिया को बहुत बहुत हल्के में लिया। भाई बुमराह बुमराह है, ठीक है, आकाशदीप भले ही इनएक्सपीरियंस है, उनकी बॉलिंग से कई अच्छी है। फिर अश्विन है, जडेजा है और मोहम्मद सिराज है। भाई कुछ तो फर्क होगा ना पाकिस्तान में और इंडिया में। ये एक इरेगुलर किस्म की चेन्नई पिच थी, रेड सॉइल पिच थी, पर यहाँ पे उछाल था। उस उछाल पे ना तो आप आकाशदीप को नहीं खेल पाए। आकाशदीप ने एंगल बदला और एक ओवर में 2 विकेट ले लिए। बुमराह को एक गेंद लगा एंगल बदलने में और भाई बैट्समैन के होश फाकते हो गए। तो थोड़ा मैं ये मानूंगा, आई डोंट बी टू हार्श हियर, बट बांग्लादेश बहुत बहुत हल्के में इंडिया को ले ली इस बार। आप में से बहुत लोग कह रहे थे मुझसे कि भाई ये टक्कर देंगे टक्कर देंगे। मैंने कहा कौन सा टक्कर भाई, पाकिस्तान को हराकर अच्छी बात है कि टीम कॉन्फिडेंट होकर आएगी, और उनकी बॉलिंग वाकई में ठीक ठाक लगी। इंडिया की टॉप ऑर्डर अभी भी प्रॉब्लमैटिक है, लेकिन भाई कहां इनके बैट्समैन जो एक समय पर 36 पे 6 थे पाकिस्तान के बॉलर्स के सामने। ये क्या बुमराह, सिराज, आकाशदीप, अश्विन और जडेजा के सामने बैटिंग कर पाएंगे? ये लोग 50 ओवर भी नहीं खेल पा रहे हैं, और नजमुल हुसैन शंटो कह रहे हैं कि भाई हम 5वें दिन के आखिरी सेशन तक मैच ले जाएंगे। भाई जैसे कि मैंने कहा था, या तो आप 3 दिन के अंदर या मैक्सिमम लंच बिफोर लंच ऑन डे 4 आप ये मैच हार जाओगे।
आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर अ कॉन्टेस्ट. अच्छा हुआ कि हसन महमूद के 5 विकेट द्वारा कहीं ना कहीं इंडियन टीम दबाव पे आई, लेकिन 308 रन की लीड है भाई. ये टीम 150 तक नहीं बना पाई. आई एम जस्ट वंडरिंग, maybe India can just bat to lunch tomorrow. Let Rishabh Pant get some runs. Maybe Shubman Gill gets a 50. Have some fun. Declare tomorrow at lunch. और हो सके 3 दिन के समाप्ति पर इंडियन टीम को 2 दिन का ब्रेक मिलेगा. नॉट बीइंग हार्श, आई डोंट वांट टू बी डिसरिस्पेक्टफुल, बट भाई जो अंतर है इंडियन टीम में और बांग्लादेश में, आई होप नजमुल हुसैन शंटो एंड हिज टीममेट्स रियलाइज दैट. वेल बोल्ड, बट बॉस आपकी बैटिंग बहुत बहुत खराब है इन कंडीशंस के हिसाब से, है ना. विराट रिव्यू लंदन लेके जाएंगे. हाँ यार, मैंने देखा विराट, पता नहीं क्या विराट, आई थिंक विराट की बैटिंग इतनी इतनी लो लेवल तक गिर चुकी है कि उनको खुद पे ही भरोसा नहीं है. थिक एज पर. एनीवेज, कोहली के बैटिंग में कुछ इंप्रूवमेंट दिखा या नहीं? आप किस हिसाब से इंप्रूवमेंट देखना चाहते हो? 9 महीने के बाद तो टेस्ट खेल रहे हैं. पहली पारी में क्या 8 गेंदें खेली, आज उससे शायद डबल गेंदें खेली. क्या इंप्रूवमेंट? पहले इनिंग में फेल, आज भी फेल. 50-50 में यार. ये विराट ने क्या किया? विराट ने रिव्यू नहीं लिया. क्या बांग्लादेश पाकिस्तान को हराकर ओवर कॉन्फिडेंट? बिल्कुल प्रतीक, बिल्कुल. एक बहुत ही एवरेज या पुअर टीम को हराकर आप अपने आप को इंडिया से नाप रहे थे. बेवकूफी की बात थी भाई ये नजमुल हुसैन शंटो द्वारा. बुमराह went bonkers. Bumrah was just outstanding. Hi, Jamie. Think this stage was overhyped than usual. Overhyped in the sense that it looked like sports fan Bangladesh might bring a challenge, but that challenge was squashed in literally 4 sessions. And yes, Bumrah should be rested. बांग्लादेश का परफॉर्मेंस होम टेस्ट में भी ऐसा ही होगा इंडिया के अगेंस्ट. भाई इंडिया को कभी नहीं हरा पाए ये लोग, चाहे घर पे हो या बाहर. यार objective cricket lover, क्या बात है यार. Should India declare a 350 target? Yes, like I just said, my friend, a couple minutes ago, I'd be very happy if they batted 1 session. देखिए, अगर ऋषभ पंत 1 session खेलेंगे, objective cricket lover, तो you can expect that you're going to get 95 runs in a session. Let Rishabh Pant get a 50, a welcome 50 on his comeback after 20 months. Let Shubman Gill, don't even think about middle order. I would say bat, if India have a lead of 308 right now and they bat 1 session, you're going to get to 400. And 400 for a team that couldn't bat 48 overs is out of the equation. So declare by lunch, 390, 400, and you will win the match in 2 sessions. जय भाई, विराट क्यों नहीं पता नहीं है. बहुत महीनों से, सालों से हम विराट के खराब टेस्ट फॉर्म के बारे में बात हम करते आ रहे हैं. और आई नो ओनली 1 मैच, 9-10 मैच बाकी है सीजन में, लेकिन उनको बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ी. होगा. कोहली just looks overconfident. The spin was बिल्कुल. It's all mental. Just like KL Rahul and Virat Kohli, the same boat. It's nothing technical. It's just mental. Virat Kohli is playing test matches after 9 months. He's feeling. I mean, he couldn't sense an inside edge. हमारे बहुत ही वाहियात क्लब लेवल पर हमें बाउंड्री पे बैठे हमें अपने टीममेट्स का थिक एज सुनाई देता है, और यहाँ विराट कोहली जैसे महान प्लेयर को थिक एज नहीं सुनाई दिया. It's clearly here, Utsav. But in hindsight, it's serious. We need to look and discuss our top batting. Bilkul. I said this yesterday. Virat Kohli and others getting out to a 135 kph bowler in India. What will happen in Australia? Virat Kohli overseas condition में खेल नहीं पा रहा. भाई overseas तो दूर की बात है भाई, वो चेन्नई में नहीं खेल पा रहे. हाय बाय जैसे सर फन. अश्विन विमल कुमार के पॉडकास्ट के बाद सेंचुरी मारी, मजे आप. हाय बाय जैसे सर फन फैक्ट. अश्विन विमल कुमार के पॉडकास्ट की बात सेंचुरी मार, पता नहीं क्या करूं दोस्त, थोड़ा पता नहीं. अब विराट कोहली का डाउनफॉल शुरू हो गया. डाउनफॉल तो भाई काफी साल से चल रहा है दोस्त. दिस टेस्ट will end by tomorrow or Sunday. Even next test gets on Friday and on Sunday. Smart planning by IC and BCI to not take the match on Monday. I think, like I've been saying, it should be over tomorrow. Yeah. ऋतुराज कह रहे हैं, ऋतुज कह रहे हैं, जेमी जी गुड मॉर्निंग. भाई दोस्त कहां से आप बोल रहे हो? आप यहाँ तो शाम हो चुका है. लाइक द वीडियो, गो वर्क. चलिए दोस्त, आप कहाँ हो? मॉर्निंग मींस अमेरिका, आई थिंक. आपने शायद जिक्र भी किया उस बात का, मुझे याद नहीं. बट हैव अ ग्रेट डे माय फ्रेंड, हैव अ ग्रेट डे. Why Gill looks more assured in second innings? Look, in the first innings, like I said, it was a sloppy shot, but he got out to a ball that pitched a foot outside leg stump. He was looking for a 4. He did all said and done. Gill scored 450 runs in the last time India played a test series. Is he an ideal number 3? No. Is he going to struggle a lot in the future? I don't think so. He looked very, very good.
Is Kohli's form a spot of bother? Joy, it's been in Test cricket, it's been a spot of bother for 3-4 years now. Bumrah, Akash, Deep, and Siraj were a solid pack. That first wicket of Bumrah just made my day, Jamie. Bilkul, bilkul. 5 balls over, 1 ball around, and Shadman Islam didn't have a clue what to do. K7 edits keh rahe hain, I think Virat might be finishing Test. Not finished, but like I said yesterday and right now, he's going to have to work a lot harder mentally to get himself up to that mark again. Only Pakistan can make ordinary team like Bangladesh look like cricket beast. Bilkul sahi. Mathematician. Captain Hitman. Jamie bhai, kya Virat was in good touch? Again, how do you judge good touch? He only got what? 10 runs? 9 runs? Tough to say. I don't think so. सर फॉलोअर नहीं हुआ, मुझे नहीं पता चला, इसलिए पूछा. अच्छा ठीक है. अंपायर को गाली देना नहीं देना चाहिए, विराट को रिव्यू नहीं चाहिए. बिल्कुल सही मैच, बिल्कुल बिल्कुल सही. गाली खुद को दो जाके आईने में. ये भाई बुमराह ने बांग्लादेश को उड़ा दिया. बुमराह और ये क्या नाम है अपना आकाशदीप, वेरी वेरी गुड बॉलर यार. विराट को slight off topic is WTC final. Again, we've discussed this 1,000 times. You know my views on this. I'm not going to go there again. बांग्लादेश को पता चल गया होगा ये इंडिया है भाई. बिल्कुल ये इंडिया है, पाकिस्तान नहीं है. The picture is clear. Bat for 2 sessions, put on score of 450. Yes, I mean logically they probably would bat because they'd want to get poor KL Rahul some form. But I'm saying you've already got 308. If Rishabh Pant bats for an hour and a half, you're getting 90 runs there. Lunch tak declare karo bhai. बहुत run hai yaar. Jamie, do you agree with Pant being center of KL? Yes, I said this yesterday on my own channel as well as Cricket Next. If you've picked KL Rahul, back him at number 5. Now in back-to-back innings, you have indirectly told KL Rahul, okay, boss, we don't actually have faith in you. We'd rather take a maverick cricketer who's not played Test cricket for 20 months over you. Now, it's not just about lefty. Kal ke show ke baad, kal ke din ke baad, I explained this very, very detailed on our live stream. I said, had they sent KL Rahul at number 5 yesterday with India 3 down for 33, it would have given, in my opinion, it would have given Bangladesh a bigger opportunity India ke upar chadne ka, because KL Rahul is not going to do what Jaiswal does or what Dhruv Jurel does or what Sarfaraz does or what Pant does. He's not going to take them on. He's not going to counter-attack. He's going to face 100 balls, get about 30-40 runs and then, look for a 50. 52 गेंदें खेल के 16 रन के लिए जो कल एक डिफेंसिव शेल में गए केएल राहुल, had it come batting at 5, it would have put India in a hole. Good call to send Rishabh Pant, but first of all, Rishabh Pant is not a natural number 5. The guy keeps wickets. He's changed matches batting at number 6 more. If you pick someone for number 5 and you have a captain like Rohit Sharma saying, we're going to play KL Rahul for a long time now, अगले ही दिन आप उसमें confidence आपने खो दिया. So I have a problem with KL Rahul being picked for a specific role and then back-to-back innings when the team is under pressure, you're pushing him down. You're indirectly saying, boss, तुम इस लायक नहीं हो. So that's my answer to you, my friend. बांग्लादेश टीम इतना भी ये आप लोग जो टाइप नहीं कर पाते ना भाई, मैं आपके सवाल तो लूंगा नहीं. Should India declared? Already discussed that. Arshdeep bowl, Akashdeep bowl very well. Gill is batting well. Yes. Abhi Ashwin. Hello. Good morning, afternoon, everyone. Devang, kaise ho? Top orders or disappointment? Hui par good to see team play well. Bilkul, yaar, you're gonna smash Bangladesh in 3 days. Arpit keh rahe hain, please like the stream. Bilkul, bhai. बहुत लोग आ चुके हैं. Please like ठोकिए. जय भाई, मेरे को लगता है कि इंडिया का टक्कर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से ही है. बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है. कोहली डाटा था, बिल्कुल डाटा था. जय भाई, हाई फ्रॉम लक्समबर्ग. क्या बात है, वहां का मौसम कैसा है विनय भाई? किंग वाज लुकिंग गुड फॉर 100. यार, किंग वाज लुकिंग गुड फॉर 25 रन. आजकल अगर विराट कोहली 25 रन बनाए ना, मैं पर्सनली बहुत खुश हूं. 100 तो दूर की बात है भाई. आकाशदीप का सिलेक्शन वसूल हो गया. बिल्कुल मनीष भाई, बिल्कुल. इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए. I feel we should bat till 10 overs before tea. Bilkul, you can do it, but I think runs will come if Rishabh Pant bats the whole morning session. Bumrah's average is the second best in history. Correct. For those who have more than 400 international wickets. Joel Garner, number 1. He is one of the greatest. Bilkul, he's been a great for many years now. AB Jay, my big fan. Shukriya dost. Kaise ho aap? Do you feel despite being so far in this game, we lost most of those 3 wickets by playing defensively? Rohit was not out defensively. Rohit just got out pushing at a ball that sat up. Jaiswal was in 2 minds, and Virat Kohli,
I mean, Virat Kohli didn't spot a thick edge. So I think Virat Kohli's problems have been discussed on this channel for the last 4 years. Post COVID, he's got what, one test 100. He's been a very average test batsman in the COVID post COVID era. So nothing new there. Rohit surprisingly averages under 9 now against Bangladesh. That's a problem because when you dominate top teams, you should be smashing Bangladesh. But again, both innings he got balls that left him. So I wouldn't read too much into it. It's not going to happen very often that India keep losing 3 wickets for not too many runs. Yes, Isad, Gill is good today. आइसबर्ग चौहान, क्या बात है भाई? जय भाई, अगर कोहली लंदन रहता था तो वहां के क्लब्स काउंटी में खेलना चाहिए था. वो जो भी करे भाई, फिलहाल तो उनको अपना टेस्ट करियर बचाना पड़ेगा. विराट कोहली has averaged 28 since, बिल्कुल like I said, yeah. James live in the US. US, okay. I thought so. Do you think KL Rahul doesn't come out of under pressure? KL Rahul, and I mentioned this yesterday on another news channel. KL Rahul has given an open statement that 2019 Coffee with Karan episode, उसके बाद जो उनको 2 महीने की सजा मिली, it, and I quote, it scarred him. And I read those quotes yesterday. And after reading those quotes, I went and did some stats. Pre the Coffee with Karan interview and post the Coffee with Karan interview, it's almost like there's been two different KL Rahuls. Of course, injuries have played a massive part. He's had 2 major setbacks. But the free-flowing batsman across 3 formats became so defensive across 3 formats post that Coffee with Karan interview. And when a player of KL Rahul's class, who at one point looked like being a far more successful batsman than he has become, when he says I was, and I quote, scarred by that incident, I think he's just never recovered from being suspended for 2 months. रिकी पॉन्टिंग कभी ऐसा डाउनफॉल था विराट जैसे पर, फिर वो उसने सेंचुरी मारी थी के सामने, मुझे लगता है 40 प्लस तो आएंगे, उम्मीद करते हैं. आई कैन गेट ओवर इंडियन ऑन एक्स नाउ दे से. अरे भाई, एक्स को कोई भी इंपॉर्टेंस मत दो यार, बहुत बार कह चुका हूं. एक्स इज फॉर ट्वीटिंग जोक्स. आगे बढ़ो. Is the pitch not giving anything for a spinner? No, there is some turn. In place of Rahul, if not him, the man is there, the man who you just dropped, Sarfaraz Khan. On these tracks, you need Sarfaraz Khan. कल का दिन अच्छा था, 3 मैच देखे हमने, बिल्कुल सही. Performance aside, Nihal कह रहे हैं, there is just so much social media hate for Gill. I don't get, but again, why give importance to social media? Social media is for losers, man. Move on. रोहित की वर्स्ट कैप्टनसी, पेसर की पिच पे आकाशदीप 5 ओवर, अश्विन 13 ओवर्स. अगेन, बंदे ने बेहतरीन बॉलिंग करी. आकाशदीप ने लंच से पहले 1 ओवर में उन्होंने 2 ही ओवर निकाले और उनको ओवर नहीं मिला उसके बाद. Strange. Weather in Luxembourg. 5. Oh, that sounds brilliant, yaar. 5 to 20. Ooh, must be cold there, na, winters. जय भाई, टेस्ट क्रिकेट बेस्ट है, बिल्कुल सही. इंडिया को साल में 15 टेस्ट खेलना चाहिए, पर मजा आता अगर ऐसा होता. हाँ, सही बात है. लव फ्रॉम रुड़की, क्या बात है यार, रुड़की. Been there thousands of times. Thoughts on Afghanistan versus South Africa? South Africa, terrible one-day team. Jamie think after Virat till 19, Travis Head's unstoppable and dominating all formats. बिल्कुल, Travis Head का टाइम चल रहा है. ये भाई, आईफोन के लिए काहे पगला जाते हैं लोग, थोड़ा प्रकाश डालिए. क्या पता भाई, विराट से पहले केन 9000 बना लेगा, पता नहीं यार. Morning Morkel in a sweet spot. He is. I have recently started watching your analysis as Utkarsh Chaturvedi and I enjoy your take on the game. Shukriya. Welcome to our small community. Stick around, my friend. Thank you. KL is best test classic batsman. क्यों मजा ले रहे हो यार बेचारे की. Virat is saving his best for Australia. Hopefully. Bengal are doing something right in blooding decent quick. Shami, then Mukesh, and now Akash. Good point, Amin. NZ versus SL review. Yeah, I'm not watching that match. Yeah, when India is playing, I can't afford to watch anything else. Jay by test. Is Virat finished in test? No, not finished, but he'll have to dig deep into his reservoir of experience and say, boss, Virat, तुझे क्या करना पड़ेगा relevant रहने के लिए? Because right now, it's been 3-4 years of very substandard 28 के average कि किसी ने कहा था कोविड के टाइम से, not good enough. And like I said, it's going to be a bloody tough ask for him to get to 10,000 runs, which in this modern era is the basic requirement to be termed a great. 10,000 runs. East or West, Gill is overrated and Sundar is underrated. No, I don't think Gill's overrated at all. Anybody who scores 450 runs in a series cannot be overrated. Today, Bumrah, yes. Some are saying Akash Deep is Hardik's replacement. Great. Satrikal, Deepak, kaise ho? Jimmy forgot to ask why Cricket Next changes channel. I don't know, my friend. I get a call in the morning saying, "Bhai, Sam pe aa jao." That's the extent of my involvement there. Head on stopper ho ja raha hai. Bilkul. How come my quality improves in the matches in Dharamshala? How come my quality?
हाउ कम माय क्वालिटी, आई नो आइडिया व्हाट यू मीन बाय योर क्वालिटी। जी भाई, फिर से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज ये अरे यार, आकाशदीप इतनी बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं, बुमराह इनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, और 4-5 बार आप पूछ रहे हो हेड के बारे में। हेड को देख क्यों रहे हो भाई? इंडिया को सपोर्ट करो यार। इज बुमराह द ग्रेटेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर? बिल्कुल, आई हैव सेड दिस फॉर years now. Watching Akashdeep batting, I think he's playing better than Rahul. Well, he got some more runs than Rahul. No matter Tibet, कैसे हो? I'll watch later. I'm on the clock. You have a great day, my friend. Drive safe. Stay safe. Jamie G, with all due respect to Kale, if you're rattled by a 2 month suspension, you're not mentally fit. Ruturaj, that's what that's what I've been saying now for many, many years since the 2022 T20 World Cup. I've been saying it's you cannot scientifically, mathematically, statistically, rationally explain what has gone wrong with KL Rahul. I'll say it again for your benefit. Sky, before Sky became Sky, KL Rahul was doing Sky level things, but something changed. And we've discussed this. I've mentioned how I've heard from people in the Indian team and around franchises that he's been told to bat freely. When a man with that obvious insane talent fails to bat out time and fails to apply himself and underperforms, he's got the lowest average for any Indian player who's played 50 test matches. So something is not right with KL Rahul. And when he says that he was scarred by that interview, it just says what I've been saying now for the last almost 2 years. Something is it's beyond technical with him. And I hope the stakeholders of the Indian team can get the best out of KL Rahul. How much advantage does left right combination that? It's all the same, man. It's very overrated. इंडिया में 4K क्वालिटी में ब्रॉडकास्टिंग क्यों नहीं होती है? लुक एट प्रोडक्शन क्वालिटी इन इंग्लैंड। होता है इफ यू वॉच इट ऑन जियो, यू गेट 4K क्वालिटी। जय भाई, आपका भाई तो बहुत मारता है ट्रेविस हेड। बिल्कुल बिल्कुल, आप ट्रेविस हेड के दीवाने लगते हो। ईगली क्रेविंग इंग्लैंड पार्क, दैट विल बी फन। विराट एंड फोर्थ स्टंप वाली बीमारी ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा? बिल्कुल भाई, 135 की बॉलर को वो आउट हो रहे तो सोचो वहां क्या होगा। टेस्ट मैच में मजा नहीं आ रहा? बिल्कुल, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। कल लंच तक खेलो फिर बांग्लादेश को पेलो। बिल्कुल इंडियन ब्रदर। गवास्कर ने बोला कि सचिन द्रविड़ जैसे प्लेयर अक्सर उनसे टिप लेने आते थे, लेकिन आज के प्लेयर सचिन के पास नहीं जाते कुछ टिप लेने। उनकी चॉइस है यार। हाउ कम माय टीवी गोइंग एक्सपीरियंस इन I'm not sure. I don't see any discernible difference when I watch anything on Geo. So maybe change your TV. I don't know, my friend. Arshdeep in Test. Yes, discussed this many times. I think he should go, but now he's too far behind. मुझे लगता नहीं कोहली 10,000 रन टेस्ट में बना पाएंगे। बिल्कुल, मैं भी। Captain Rohit is not performing and it's really sad. Hitman needs to work. Again, I mean, Rohit Sharma had a very successful series against England. It's just one match against his worst opponents. He averages under 9 now, but I wouldn't worry about Rohit Sharma. After Bumrah, India के bowling का future dark होता पता नहीं क्या कह रहे हो। JB was Shakib always this bowler? No, he was not this bad. Rohit Sharma, Virat Kohli against off spin in tests in 2020. Innings 32 runs out. There you go. There you go. Again, we've discussed this for like 1,000 shows, Ravi Shankar. Since COVID, Virat Kohli has been a below par test batsman. Nothing new. Leg spin, left arm spin, off spin, pace. I mean, he got out. Did you see he got out nicking in India where he should be driving on the rise for 4. He got out playing forward to 135 kph seam bowler. So we all know it's been a very, very tough 4 years for him. Virat seems disinterested. It happens, my friend V. Subramaniam, when you don't play test cricket for 9 months. Very, very rusty. Hardik. Another person has come, Hardik. Oh my gosh. I don't know how people even think Hardik Pandya is coming back. Bhai Pujara. आप लोग कौन से दुनिया में रह रहे हो यार? किसी को पुजारा चाहिए, किसी को हार्दिक पांड्या। अलग ही लोग हो वहां पे। Punishing players for comments made on TV shows is wrong. Performance and conduct should be the only criteria for selection and rejection. Correct? It should be. भाई आपको बेस्ट टेस्ट मैन बैट्समैन लगता है all time best? Sachin and Brian Lara. Rohit is good but not great. Yes, he's good. How do you foresee the test schedule for India? How do I foresee it? Well, I can tell you there's a test match on the 27th. Then there's 3 matches from October 16th against New Zealand. And then there's 5 in Australia from November 22nd to January 10th. I think that's the schedule. That's how I foresee it. Shashank, कैसे हो भाई? Good to see you. 2017-18 में लगता था काश धवन रोहित कोहली के साथ राहुल टीम में टू बीइंग फ्रस्ट्रेटेड उसको टीम में देख। टाइम इज क्रूल। बिल्कुल यार, टाइम इज क्रूल। एक अनाउंसमेंट है, सब क्रिकेट मैच म्यूट करके देखो। भाई ये कुणाल तो अलग भांग पी के आया आज। रोहित
Poor performance. I mean, obviously, I mean, when you don't score against Bangladesh, that will go in the poor category, ना. चेपॉक का क्राउड कैसा था भाई? मैं तो हूं नहीं वहां पे, लेकिन मुझे ठीक ठाक लगा. आज काफी लोग आए थे अश्विन की बैटिंग देखने. What's the best point to bring a spinner? There's no best point. It depends on the conditions. In India, Ashwin often starts with the new ball when visiting teams bat again. So there's no set time here. If your bowler is Ashwin, I would say bowl him whenever you want to. This morning he came for the eighth over. KL got unnecessarily dragged with Hardik in that coffee. Not unnecessarily. He was sitting there, and when you're part of it, unfortunately, you will get clubbed together. No? Waiting for first day 500 score, and Joe Root will score more than 600 in Test series, possibly. Does Virat Kohli have capability of making comeback? Bilkul. I mean, it's Virat Kohli. He's got nearly 9,000 runs. Of course, he has capability. Do you think Gill performance hamper while playing in different batting positions? No. ऐसा कोई hamper की बात नहीं है. Gill should not be playing. बहुत बार कह चुका हूँ. Gill should not be playing T20s, and in Tests, ideally he should be batting at number 4. वो 3 के लायक नहीं है वो. जय भाई ईशान का कोई चांस बनता है? फिलहाल तो नहीं, because you got Dhruv Jurel waiting behind. Your friend Kushan Sarkar hinted Hardik Pandya is going to come back in Test cricket. God bless him, but there's not an ice cube's chance in hell of that happening. जड्डू का सेंचुरी रह गया. बिल्कुल. Why Kohli miss it? Why not take review? आप उनको टैग करना, ठीक है, सोशल मीडिया पे. आप उनसे पूछो, विराट सर आपने क्यों नहीं उसको रीड किया? Jaiswal should tighten his game in these 5 tests, else he'll be ruthlessly exposed. Exactly. Against England, Jaiswal had a poor start, but then he got 722 runs. So I'm the last person I'm concerned about when it comes to batting is Jaiswal. In Google, Akashdeep name is changed to Skydeep. वो किसी ने hack किया होगा. Who are currently the best 2 batsmen in Indian team? In Test cricket, you're asking me? Jaiswal and Pant. Jaiswal's weakness against express fast bowling looking evident now. He scored heavily against spin after playing out pacers. Won't happen in Australia. Again, when you score 722 runs in a series, you're obviously good enough to play here. He's only played 2 test matches in South Africa, so the sample size is very, very small. Of course, when you go to Australia, it is the toughest place to play cricket, Test cricket in the world. But I think he'll be good. He'll get about 350 runs in those series. जय भाई अभिमन्यु ईश्वरन ही शायद कंसिस्टेंसी दिखा रहा है दिलीप ट्रॉफी में. मैंने आज का मैच तो फॉलो नहीं किया. क्या किया उन्होंने आज? कोहली एंड रोहित should retire. Not yet. Post this cycle. 5 IPL trophies, 1 World Cup. Major Rohit Sharma is not good. I think he's pretty good. Jay Bhai, choose one. If Rahul gets dropped all under 6, I mean, I've been saying for the last 1 month, KL Rahul should not be playing. I'd go for Sarfaraz. So you have my answer already. Fun fact: Dhoni and Ashwin has same number of Test century. Ashwin has overseas century, but Dhoni don't. I mean, MS Dhoni was not a very good test player overall, so understandable. कॉफी विद करण में जब हार्दिक ने ये बोला टीम के बाकी प्लेयर भी ऐसे हैं, तो केएल ने नहीं रोका हार्दिक को ये सब बोलने हैं. अच्छा, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों मिलकर भी इंडिया को नहीं हरा सकते. नहीं होते. गिल सेंचुरी लोडिंग. He looks very, very settled, and he's got a much better record in the second innings of a test match. So let's see. Sir, tomorrow the Heroes of the World Cup will appear on the Kapil Sharma show. अच्छा ऐसा है क्या? Okay, I don't know. I don't follow much. So story of Virat Kohli and Richard Kettlebell is very long and everyone knows history. अच्छा ठीक है. Who is most likely to score most runs in Australia tour for both teams? You mean one Aussie? One Aussie, I would say either Cameron Green or Steve Smith. And for India, I would say either Rohit or Pant. I think this is the last chance for KL to come back. Well, Ujjwal, you must have heard Rohit Sharma's statements from a day before the test match. He said we're going to give him a long, long rope. So that means that despite failing against Bangladesh and New Zealand, if he does, he's still going to Australia. So अभी बहुत time है KL राहुल के पास. जी भाई, इंडिया के पास कोई लेवल फास्ट बॉलर ऑलराउंडर नहीं है. इतना कुछ टॉप क्लास ऑलराउंडर नहीं है. When should we expect? Well, I've already been asked the question. I think it'll happen post T, but I'd be very happy if it happens around lunch because you've already buried Bangladesh in this test match. ये भाई कौन सी मूवी देखी लास्ट आपने? स्त्री 2. KL Rahul 15 runs, 6-7 innings. हो सकता है those some rookie. For some reason, I'm not very worried about Gill. Same here. I'm not worried at all. Story would be different if India were touring New Zealand or England. Yes, I agree with you. क्या इंडिया 500 के ऊपर लीड लेगा? ले सकती है क्योंकि बहुत सारे बैट्समैन हैं जिनको जरूरत चाहिए रन्स की और क्रीज पे समय बताने की. बट आई थिंक देखो 308 है, जैसे कि मैंने कहा पहले, अगर पंत पूरा एक सेशन खेलेंगे
तो 90-100 रन आ जाएंगे वहां पे। आई थिंक 415, 430, इट्स अबाउट माइलस्टोन्स। क्या वो गिल को 100 बनाने का चांस देंगे? क्या वो पंत जो कि 20 महीने बाद आ रहे हैं, क्या वो उनको 50 बनाने का मौका देंगे? इट्स अबाउट स्मॉल माइलस्टोन। आई थिंक 425 भी प्लेंटी है। Virat Kohli walking wicket. He should retire from Test and give chances to young. Again, it's not in his hands, no? So he's not going to retire anytime soon. Question of the day. Kya? Well done, Kunal. Well done. Why are we seeing southpaws like Jaiswal, Saj, Shakil, and Kamindu Mendes doing great? Not the first left-handers. Michael Hussey began very well. I think was Adam Bojes a lefty? I remember Adam Bojes had a great start. So बहुत सारे lefties हैं जिनकी शुरुआत, Andrew Strauss की शुरुआत बेहतरीन हुई थी. Cook got 100 on debut. बहुत सारे lefties हैं. इसमें कोई नई बात तो है नहीं. Punt is key from here. Correct. I think Mehdi can play instead of one batter, and Taijul is because I said yesterday. I said leaving out Taijul will prove to be a blunder from Bangladesh. According to you, which cricketer was low hype but his performance was extremely good? Paul Collingwood. Paul Collingwood was outstanding across three formats. Got a double hundred once. कोई उस बंदे के बारे में बात नहीं करता. He's got a 6-wicket haul in one-day cricket. Outstanding all-rounder who didn't get his value. Raina too. Raina, yes, Raina got a test 100 on debut. Correct. You look like Hayden तो भाई 6.5 फुट के हैं. But चलिए, that's the first. आज भी सेंचुरी मारा है अमन इन द टेस्ट. अच्छा, 100 मारा आज. Again, he seems like one of those journeymen जिनका समय कभी आएगा नहीं यार. It's unfortunate. He's a good guy. I've actually he came on this channel during lockdown. I actually interviewed him. But yeah, good guy, good domestic player. But one of those players like Amol Mazumdar will just be probably destined to be a domestic player, unfortunately. Can Pant score 100? Of course he can. Yes, of course he can. How can Kohli miss a ball this straight? Like people have said, because Virat Kohli has serious problems against spin, my friend. Chandar Paul was probably the king of underrated test batters, rarely gets named. I don't think anyone would call Chandar Paul underrated. Yes, he wouldn't be in anyone's top 10 because he was often a pain to watch, but he was more than that. Adam Bojes. There was one more Australian guy. He came in the 2015-16 era. He was a lefty, maybe a little before. He also started off. Was it Phil Jakes? Another Australian lefty came and got a couple hundreds in his first 3-4 test match. मुझे उनका नाम याद नहीं. How is it at the middle of the test match having a rest day? Oh, because they're having the election, the general election, so there's a rest day. Hi अंग्रेज भाई, आप लोग बताइए इसको, विराट को क्या हो गया? विराट को थोड़ा जजमेंट की दिक्कत हो रही है भाई. Even Harsha, DK are competing on Hardik inclination. Good, they're all smoking something very, very strong. Strange things happen on a cricket field. I thought 11 World Cup match in England, there was a huge edge from Andros's bat, and Dhoni catch the ball, but especially no player appealed for that time. Yes, I remember that. That's true. Afghanistan is currently most underrated team. No. I think of the last 2 years, what they've done, no one's taking them underrated. No, not at all. Usman Khwaja, but did he start off so well? Usman Khwaja 3.0 is the one that's been very, very strong. But Virat अपना घर London miss कर रहा है. How much India should declare? I've already said that. I think they should declare around 400 by lunch. Declare at lunch. Pant is a better test player than MS Dhoni. Oh, I mean, I've been saying this for the last 3 years. Pant is India's all-time greatest test keeper. No horror movie can beat KL Rahul World Cup final innings. I agree. That was the worst innings I've watched in a World Cup. वॉन ने हार्दिक को नेक्स्ट स्प्रिंट ऑफ कहा. आपका क्या मानना है? बहुत बार कह चुका हूं, माइकल वॉन जो भी गए सानू की है. ईश्वरन एंड पंचल ने इंडिया ए के लिए बहुत खेला, बट नो कैप ट्रस्ट देम फॉर इन सिलेक्शन. Again, it's not like they didn't get trusted. It's just, they were competing against some very, very good players. तो मुश्किल की बात है. Chris Rogers came in the 2008 series when he was colorblind. Maybe Chris Rogers, when he came back the second time, maybe I'm thinking about him. He got a lot of runs when he came. I think it's Chris Rogers. But Chris Rogers 2.0. I think he's the guy. Lefty now with specs. पंत मैच विनर है. आपने क्रिकेट देखा है? जी भाई, एकदम बेस्ट कैचेस फील्डर्स पे शो हो जाए. यू कैन गेट द इमेज ऑन स्क्रीन. हाँ यार, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए यार. इतना मेहनत मुझे नहीं करना है भाई. As far as Aussies lefty, शायद आप मार्कस नोट की बात कर रहे हैं. Marcus, no, but he was dull. I think it's Chris Rogers I'm thinking about.
Can you explain how test matches in, I mean, which ground holds test match? Every year, the BCA has an obligation to give certain associate state association matches, and that's how it works on rotation. That's it. सब लोग केएल को ही ट्रूल ट्रोल ट्रोल क्यों करते हो वर्ल्ड कप फाइनल के लिए बाकी आईएएस का जडू नहीं बात सिर्फ वर्ल्ड कप फाइनल की नहीं है बात यह है कि 50 टेस्ट मैच खेलने के बाद उनकी एवरेज सबसे खराब है और टी20 वर्ल्ड कप 2020-22 में जो उन्होंने किया था दैट्स आल्सो अ फैक्टर लोग सिर्फ उनको एक इनिंग्स से ट्रोल नहीं करते हैं कलेक्टिवली अंडर परफॉर्मिंग चीज के लिए उनको वो ट्रोल करते हैं Jay bhai, just block those who are disrespectful and making. Yes, I think I'll have to block people. You're right. Afghanistan is past the 100. Bilkul, I mean, Afghanistan has done what Bangladesh have not done, and Bangladesh played cricket in 1986. Afghanistan played their first international match in 2009, and they're getting to World Cup semi-finals. So I don't think anyone in the world would make a comment like that Afghanistan are underrated. पिछले माह में हमारा पेस बॉलिंग ऑलराउंडर कौन होगा है नहीं कोई और कोई जरूरत भी नहीं है भाई Afghanistan हो गया if Kale would have been a test one player's debut he would have gone ahead of Fab 4 yeah I think so yeah but Afghanistan played good cricket that's what I'm saying Ujwal no one can say that they're underrated no अगर ऐसे ही प्रेशर में खेलते रहेंगे तो कानपुर में मुश्किल होगा जिनके रन लेकिन कानपुर फिर भी इंडिया जीत जाएगी यार 4 दिन के अंदर PhD में बाजार नहीं लेके जाओ J100 we need test try series it'd be fun no Simon I know I remember Catridge Rogers made his comeback after 6 yes that's what I know that Rogers 1.0 was a sitting duck Rogers 2.0 was very very good about this guys last question about this test I feel Rohit will start thinking about run test cricket not now अभी तो बहुत समय है Guys, I gotta go. I've got to do a reel for my Instagram channel. Then at 6:30, you can join me on Cricket Next. Love you all. Thank you for the likes. Fantastic like ratio. Probably the best like ratio I've seen. Love you all. Thank you. I'll see you tomorrow again, post-match, post-stumps to discuss day 3. Take care. Jai Hind.